Welcome back to the Koshan FS show. This is season 3, episode 8. We just got done with being clean bowled by life. So, um, in the past 2 weeks, I've been listening to this podcast called Londa Talk, and it's got Daniel Zafar, Khakan Shanawaz, Zarar Khan, and Shavir Jafri. So it's a series of episodes where they talk about जो लौंडे की बातें होते हैं and I really did miss it because like हमारे यार वो वैसे ये सब बंदे हमारी उम्र की है 1-2 साल छोटे कोई मगर उसके अलावा हमारी मतलब तजुर्बे एक ही होते हैं तो आई डू मगर इस जो 30 की उम्र है ना इस यहाँ तक पहुँचने में हमारे वो लौंडे भी गायब हो जाते हैं कि जो हमारे क्या कहते हैं कि बॉयज़ के साथ सेशंस होते थे वो आजकल ज़्यादातर नहीं होता है तो आई डिड मिस इट मगर यार हमारे वही क्या माहौल है तो दनियाल ज़फ़र यार मेरे काफ़ी ख़ास ताल्लुक़ है उसके साथ कि मैं काफ़ी साल से वैसे एक ज़माने में फेमस नहीं था और मैं तो हमारे डीएम्स में पढ़ा है वैसे सो आई न्यू हिम फ्रॉम बिफोर ही वाज फेमस और आजकल ज़्यादातर ताल्लुक़ नहीं मगर ये वैसे अली ज़फ़र की छोटे भाई है एंड मेरे एक और भी ताल्लुक़ है उनके कि मेरे एक फ़ेक टिंडर प्रोफाइल था और पता नहीं आजकल भी है और उसमें मेरे फ़ोटोज़ थे और दनियाल की थे तो हम काफ़ी वी लुक काइंड ऑफ सिमिलर कि लंबे बाल होते हैं वी काइंड ऑफ द सेम हाइट्स एक ही फीचर्स होते हैं ऐसे सब कुछ है मगर यार बंदे तो बातें कर रहे थे कुछ चीज़ों में तो वो कह रहा था कि उसकी भी मतलब हम जैसे सलमान की किस्मत है कि कोई बंदी ही नहीं है उसकी ज़िंदगी में एंड ही इज़ जनरली लाइक आई डोंट यू कैन रिजेक्ट व्हाट आई से अबाउट माई सेल्फ बट लाइक वो बंदा तो पाकिस्तान की सबसे मतलब हसीन बंदा तो है भाई और अली ज़फ़र की जैसे ही लगता है और अली यार दिल की धड़कन था काफ़ी बंदियों के और हमारे भी मगर ही वॉज टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट्स और यार मुझे ये भी लगता है कि हम ना खकान शाहनवाज़ और दनियाल ज़फ़र ही है कि एक बंदे तो काफ़ी टॉल है एक उतना नहीं और काफ़ी ख़ास ताल्लुक़ है और दोनों बंदे मिल गए ना तो इतना 4 लोगों की माहौल में भी उसकी इनसाइड जोक्स अलावा कुछ ही होता है मतलब एक दूसरे को नजर आते ही दोनों हंस पड़ते हैं तो और खकान शाहनवाज़ इज़ काइंड ऑफ फेमस ऑन इंस्टाग्राम आजकल की उसने एक इंटरव्यू पे गया और कहा था कि मैं कन्वेंशनली गुड लुकिंग था है और मेरे I've the green eyes मैं तो गोरा हूँ and he was checking his privilege मगर लोग ने गलत तरीके से मान ली तो हम ही है भाई and the two of them and actually the 4 of them were talking about being pretty boys and how that has affected them and Daniel said this one thing like लोगों को लगता है कि I play a lot मगर वाकई सच ये है कि I get played bro and ये सच है कि मेरे लिए आपके लिए we get played quite a lot कि हमारे उतने भी तजुर्बे नहीं है लड़कियों की हिसाब से और हमें काफ़ी बेवकूफ़ बनाकर काफ़ी बेवफा निकले हमारी ज़िंदगी से ये एक बात है but they were talking about being pretty boys and I was going back and they were going back to when they were younger and when their features were developing और दनियाल तो हम जैसे काफ़ी गोलू था और feminine features था कि बड़े नाक है and they look kind of cute and he's talking about how like older women would like constantly feel him up and this was true for me as well. I'm sure you have the same experience. I'll get to that but like when I was younger मेरी खाला था यार और मैं आजकल भी उससे ज़्यादा अच्छा ताल्लुक़ नहीं रखते मगर she used to tell me यार अगर आप हिजाब पहन लो ना तो सबसे खूबसूरत ख़वातीन आप ही लगता है ख़ातून आप ही लगता है तो यार ये एक तो बात मैं आजकल ये नखरे से कहता हूँ कि जो भी बंदियाँ है कि अगर मैं बंदी थी तो आपकी औकात दिखवा देते आपको मगर बात यह है कि उस ज़माने में कि 2006 हमारे टीनेज ईयर्स में ये सुनकर हमें वो मर्दानगी की कमी महसूस आते हैं एंड लाइक मेरे खाला से इस मसला है कि आफ्टर दैट आई हैड टू गो ऑन अ जर्नी एंड लाइक
to at least myself, you know, I had to prove that I was a man. और यार ये प्रिटी बॉयज़ की स्ट्रगल लोग अक्सर मानते नहीं, मगर काफ़ी मसले है भाई कि जो बदसूरत लगते जो बंदे, जैसे हमने कहा यू नो एट द एज ऑफ 14 दे लुक लाइक द 30, इसकी आसान होता है कि यू नो देर अगली दे नो इट राइट, बट कोई इसकी मर्दानगी पर कोई शक नहीं उठाएंगे. हमारे ऐसे नहीं था कि वी वर सो गुड लुकिंग, और खुदा न खासा माफ़ करेगा, मगर हमारे ऐसे थे कि it was there is a struggle associated with being a pretty boy, कि बंदियाँ भी काफ़ी कॉन्शियस होते हैं आपके साथ खड़ने में कि you know what if people think you're the better looking one in the couple, कि बंदियाँ को कभी खूबसूरती की कोई ताल्लुक नहीं. they don't care if you in my life the most annoying thing I've been told is you know मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि अब दिखते कैसे है. मगर यार बात यह है कि जो स्ट्रगल्स होते हैं हमारे, वो स्पेशली वो उम्र में, वो काफ़ी मसले हैं वो पार करने में. आपको क्या लगता है भाई? यार ये बात तो है. I think you know we touched on it before as well, where you know I think we always aspired to be like Jesse McCartney or Enrique or even Bieber for a while. Not me, but Bieber पे भी बंदियाँ बहुत crazy होती थी because he was like the pretty boy of the time, you know. जी. But Jesse McCartney for sure, you know, really embodied that. Him and Zac Efron, I think, really embodied that pretty boy look that every girl wanted, you know. और हाँ bro, बंदियाँ दीवानी तो होती थी उसकी, you know, of that kind of boy, especially if you're like, you know, like पता नहीं यार, वो features होते हैं like the boy face and you know the not too much facial like, and it's like I think we started to get those features later on, like as I grew older at least, you know. But now I definitely feel like, you know, it's good, but it does attract some negativity as well. It does कि यार लड़कियां कभी ऐसे ताल्लुक नहीं रखते, you know, they are like, ओ भाई एक बात पूछने थे कि दनियाल ने भी ये कहा था कि women always say, you know, pretty boys are not my type, मगर वाकई सच क्या है पता है कि हर लड़की ने ज़िंदगी में ऐसे एक बंदे को चाहा होंगे और मिले नहीं होंगे, और उसकी बाद you know they tend to dissociate with that dream because it's a trauma for them, and that's why they kind of settle for guys who are you know बदसूरत to say the least. कि इसकी मिसाल आप अगर बंदे के हिसाब से सोचे, there are a lot of guys who say things like मुझे ये ऐश्वर्या वाली लड़की पसंद नहीं है, सही, मगर यार वाकई में सच है कि ऐश्वर्या इसको मिल ही नहीं सकता है. तो हमारे लिए वो कोई मसला नहीं कि हमें तो मिलता है. लाइक आई स्टिल से द सेम थिंग. मेरे आजकल भी वही टाइप है, आपकी भाभी वैसे ही है जैसे ऐश्वर्या, उससे थोड़ा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, मगर यार हम कभी नहीं मानते थे कि यू नो वी नेवर लेट गो ऑफ आवर ओरिजिनल टाइप, एंड आई थिंक दैट्स जस्ट अस नॉट लाइक फोल्डिंग. बट यार लड़कियां जो भी कहते हैं ना कि प्रीटी बॉयज आर नॉट माय टाइप, दे जस्ट लर्न टू लेट गो ऑफ दैट ड्रीम ऑफ दैट्स, कि उसे पता था कि हम जैसे प्रीटी बॉयज उसकी हाथ में नहीं आने, तो क्या करे, मगर इट्स स्टिल अनॉयज मी. True, that's true, man. Honestly, वो एक कहावत भी है कि अंगूर खट्टे हैं, you know. I think that's how it is for many people, you know, who जिनके पहुंच में चीजें नहीं होती, you know. Okay. But bro, it's a blessing and a curse, you know. But I definitely see like इसके यार फायदे भी बहुत हैं कि you know I think we benefit from like positive discrimination a lot. जी. कि अक्सर you know लोग they'll give us like preferential treatment because of you know because of that. I can get a table at any restaurant if the hostess if it's a hostess, you know. Exactly, man. That's what I mean, you know. Yeah. और मगर मुझे ये चाहिए नहीं भाई, मैं खुद रिजर्वेशन करता हूँ, कोई मसला नहीं. आई डोंट वांट, मुझे ये लड़कियाँ नहीं चाहिए. Oh bro.
नहीं नहीं, ये तो समझ सकता हूँ यार मैं. It's all about loyalty, you know. जी जी, मगर यार मैं आखिर काफ़ी नाराज़ हूँ कि really like you shouldn't make fun of somebody who's young for their appearance. और मैं तो आपको पता है कि हम दोनों इसकी इल्ज़ाम हम पर काफ़ी लग सकता है कि we made fun of all the dudes who we were with, कि कोई तो मोटे थे, किसी का कुछ ना कुछ मसले होते थे, तो we did make fun of them. मगर यार मैं आजकल भी खाला से काफ़ी नाराज़ हूँ कि ये बात तो सही नहीं यार. नहीं यार, सही बात किया आपने, you know, क्योंकि और you know adults they don't, उनको एहसास नहीं होता कि ये हमें क्या असर पड़ता है जी. कि हाँ इसका what effect that has on someone in the long term, you know. Yeah. और उनको लगता होगा कि मतलब हम ऐसे छोटा सा मजाक कर रहे हैं या छोटी सी बात कर रहे हैं, but it really does affect you very deeply, you know, and like especially when you're young and like, you know, still at an age when your sense of self is developing. ये चीजें यार, it does like it is very damaging, you know. हाँ यार, और एक और बात दानियल ने कहा था कि जो हमारे अक्स है ना, जो लोगों की मतलब जजमेंट्स होते हैं वो हमेशा गलत होते हैं, कि पीपल ऑलवेज अज्यूम कि हम हरामी है, मगर हम यार वाकई में काफ़ी शरीफ बंदे हैं. फॉरगिव मी फॉर सेइंग दिस ऑन आवर ओन. मगर जो हरामी होता है वो काफ़ी बदसूरत लोग ही होता है, और हम जैसे ना, like people are always assuming, like I've had a lot of women tell me in my life that they've always assumed कि मेरी ज़िंदगी में कोई होंगे या मैं तो लॉयल तो नहीं हूँ या सीरियस बंदा नहीं हूँ, मैं ऐसे बंदा हूँ. मगर वाकई में आपकी भाभी के अलावा किसी ने ये समझा ही नहीं. मैंने आपके भाभी से पूछा था आपको लगता है कि हम शरीफ हैं, शीशा किया है, and I'm like you're the first person who's thought that, कि देखने में तो नहीं लगता है, and I'm not sure, मे बी हम भी इसकी हिस्सा है कि यू नो वो प्ले बॉय लोग तो होता है कि यू नो ये बंदा तो किसी के भी साथ घर जा सकता है, मगर यार हम घर तन्हा ही जाता है. और मेरे जो क्या कहते हैं, जो मेरी बेडशीट है उसकी सिर्फ एक तरफे ही इस्तेमाल होते हुए आजकल होते हैं. तो पता नहीं यार कि सलमान के इल्ज़ाम लगाते लोग, मगर वाकई में हम निकले शरीफ कौन है भाई? पता नहीं, शरीफ का भी मिसाल नहीं आ रहा है, मगर सलमान की इल्ज़ाम लगा देते लोग, मगर है नहीं सलमान. नहीं यार, सही बात है, you know, हम वैसे काफी शरीफ हैं, you know, maybe not like Rahul Dravid, but हम फिर भी वहाँ तक I think not at that far from Dravid and Lakshman, you know. I think अच्छे शरीफ हाँ काफी ओवरऑल काफी सीधे रहे हैं हम, you know. I think जी उतना भी हिस्ट्री नहीं है. कोई लड़की यार, बात यह है कि कोई लड़की कुछ क्लेम नहीं कर सकता है. सही यार, बिल्कुल सही बात किया आपने, you know. और ये बेहतरीन है आपकी जो हम सफ़र आखिर निकलेंगे ना, उसके लिए काफ़ी सुकून मिलता है ये बात से. तो मैंने हमेशा ये जहन में रखा था कि एक दिन मैं किसी का मुकम्मल होंगे, तो उसके लिए ये तो गलत है मैं किसी और का था. नहीं यार, सही बात किया आपने, you know. It's like I love that you put an importance on like not leaving a trace behind, you know, and not having like any kind of traceable records, you know. जी मगर कुछ किया भी नहीं. सिर्फ दलील की बात नहीं है, तजुर्बा भी नहीं है. ये बात भी सही किया आपने, you know. हाँ यार, मगर यार वाकई में मुझे दिल पर काफ़ी असर होते हैं दानियल की ये सब बातें सुनकर कि हम ही हैं भाई. और वो बंदे तो काफ़ी जैसे पंजाबी की बात, और जो हमारे जो क्या कहते हैं कि ज़माने नहीं, हमारे जो मुल्क है और उसकी जो आदतें होते हैं कि कुछ बातें वो खुलेआम नहीं कहते, especially about like sexual education, things like that. तो बंदे तो उसकी भी बातें कर रहा था कि you know the first time as a dude when you go through a few things,
इट्स काइंड ऑफ हार्ड कि हम तो काफ़ी इंटरनेशनल सीन में बड़े हुए थे तो थोड़ी और आसान थे, मगर ये जो पर्सनल डिस्कवरी की बातें होते हैं, प्यूबर्टी का असर जो होता है, ये सब बड़े बात होते हैं एक बंदे की ज़िंदगी में. ये तो यार, it is like definitely a big turning point in your life, you know. और हमें भी अगर आप सोचें हमारे जो दो शायद सबसे यादगार साल जो रहे हैं, it would be like grade 6 and 7, you know. वाकई. And इसके और भी वजूहात थे, but I think one big reason is because we were going through like puberty. Such a important phase in our lives, you know. Or it's the first time we really started to even socialize with the girls. उससे पहले तो हमारा ये मानना था कि बंदियां की कुटियां होती है. Dude, so much trouble. We actually thought they have cooties and that boys and girls are just मगर यार हम काफी जल्दी मैच्योर हुए थे. बाकी तो बंदे 2-3 साल और लगे. हाँ, कई तो यार शादी तक नहीं वो हुए थे, हाँ, मुझे पता नहीं शादी की बात भी वो बदला कि नहीं. हाँ, पता नहीं, हो सकता है बच्चे होने के बाद भी they're still shy when it comes to talking to their wife. Exactly. Like यार ये काफी हमारे मुल्क में होता है कि 10-15 बच्चे होते हैं मगर कभी गले नहीं लगते हम सब. ये सब बातें तो आम बात है. वही यार, ये मैं कहने वाला था. It's like but हाँ यार, हम लोग काफी जल्दी mature हो गए थे. I think in grade 6 itself we were already like talking to girls, you know. और C वाले थोड़े इस चीज में आगे भी थे, काफी आगे थे. हम तो pioneers थे. बिल्कुल यार. A और B तो फिर भी अब they weren't really, they were playing लुका छुपी. हाँ यार, वो तो सभी फुटबॉल पे लगे थे, वो लुका छुपी जिंदगी में खेल रहा था, हम तो छुपा रहे थे कुछ. हाँ यार, हम तो बहुत आगे पहुंच गए थे यार तब तक तो जी. पर हाँ ब्रो, जमाना था एक like ओ यार, ट्रूथ और डेयर याद है? हाँ भाई, क्या कितने बदतमीज डेयर्स दी थी हमने यार. और लड़कियां काफी मतलब मानते थे, करते थे सब. ट्रूथ पता हमेशा एक ही क्वेश्चन होता था कि आप किसको पसंद करते. ये यार हमारे लिए मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता. हमें ये बड़ा कूल सा लगता है यार कि सबका एक ही, लॉडो का तो ये सब एक ही हाथ से होता है यार. और वो बंदी तो हमारे आजकल की ताल्लुक ही मकसद है यार. अभी तो वैसे who knows where she is even, कि खुदा करे हमारी जिंदगी में नहीं है, इसकी शुक्र अदा करता. बिल्कुल यार, क्योंकि वो तब टॉक्सिक थी जब टॉक्सिसिटी भी नहीं होती थी. यार वाकई में वो लड़की नहीं, मुझे लानत ही लगता है. बिल्कुल यार. I mean, I feel like she invented toxicity, I think so. Like उस जमाने में मतलब कोई इतना ज्यादा सोचता भी नहीं था, playing like mind games and like काफी मतलब कामयाब थी बंदी. वही यार कि उस जमाने में जी इतने रेड फ्लैग्स थे कि वो चाइना थे. और हम आजकल इतने ग्रीन फ्लैग बन गया जी. हम इतना ग्रीन फ्लैग बन गए भी पाकिस्तान है. हाँ ब्रो, हम तो शुरू से इतने पाक साफ थे I'm surprised कि उसके बाद से हमारी विलन वाली आर्क शुरू नहीं हुई. हाँ यार वाकई में मैं यकीन ही नहीं कर सकता कि हम इसकी बात प्लेबॉयज तो बने ही नहीं, हम फिर भी मोहब्बत में यकीन की. अजीब. हाँ यार, वरना क्योंकि बार्नी स्टेट्सर की यही कहानी थी कि उसके साथ जब धोखा हुआ था भाई, वो तो फिर he just turned into a lady killer, जी आखिर होते है कि अगर आपकी जिंदगी में एक बंदी है जो आप बेहद चाहते हैं और वो बेवफा निकला तो यार ख़त्म हो गई कहानी. उसकी बाद मोहब्बत में यकीन ही करना मुश्किल है, मगर हमने की, बड़ी बात है. यही तो बात है ना कि
this is how, like, you know, playboys are born. जी तो उनके साथ कुछ धोखा होता है, and then, you know, हाँ यार that's how Barney takes birth, you know. But हाँ यार, हमारी अलग बात थी, you know. हमेशा we were hopeless romantics. We just always believed in true love, and, you know, finding the walk to remember, someone to take that walk that we'll remember. जी You जी know? कितने चूतिए बंदे थे ना वैसे आज के लिए आपने MP3 देखी थी? जी I am so embarrassed मेरा पहला प्यार, you जी know? जी MP3, bro, and it's so iconic because MP3 players were like a classic back then. हाँ यार हम दोनों का यार हमारा, we had a handy one, you know, that we used for many years. जी And उस जमाने में ये फिल्म आई थी, you know, मेरा जी पहला प्यार. जी And हमें हमेशा लगता था कि हमें भी कोई ऐसा प्यार मिलेगा, you know, just like pure innocent love. यार मगर यार वाकई में मुझे लगता है कि ज़िंदगी में सिर्फ एक बार मिलता हो और शुक्र अदा करता हूँ कि काफ़ी देर बाद मतलब मैच्योरिटी आने के बाद मिलने तो बड़ी बात है यार कि गलत वक्त पे मिलने से बर्बाद होता है वो हाँ यार, ऐसा अक्सर होता है क्योंकि अब अगर आपको एक ऐसी उम्र में किसी से आप मिलें कि when you haven't fully developed, you know, on a personal level, तो काफी फिर जुतियाब भी हो सकता है ऐसे में. जी जी like I think I said in the last one, you know, we don't have a one that got away और ये बड़ी बात है. सही बात है यार, ये तो केटी पेरी के साथ हुआ है इससे. जी 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 मगर यार पता नहीं मुझे यार वो ये भी लगता है कि जो हमारे ताल्लुक है ना कि बंदों की जो लौंडे की ताल्लुक है वो यार काफ़ी खूबसूरत है कि you know I don't have too many good friends मगर यार जो लौंडे हैं ना सही है भाई. हाँ ब्रो, मुझे कभी लड़कियां तो दोस्त ही नहीं थे और आज भी नहीं है and I don't think कि a guy and a girl can be friends and a lot of women will say this but like यार वाकई में मेरी ज़िंदगी में मैं एक ज़माने में काफ़ी लौंडिया से राब्ते रखते थे कि दोस्त की हिसाब से और वो सब यार एक ज़माने में आपको ये पता भी है कि उसने अपनी जो ट्रू कलर्स है वो दिखाई तो उसकी बाद यार मैं लौंडिया से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता कि मेरी ज़िंदगी में 3 बंदियां हैं 2 तो मेरी ख़ानदान की तीसरी मेरी हमसफ़र है उसके अलावा मैं दोस्त ही नहीं रखता. मैं अगर मिलते जो हमारी स्कूल की बंदियां ऐसे कुछ वैसे होते यूनिवर्सिटी से काम से या स्कूल से ज़्यादातर मैं अवॉइड करता भाई कि मैं सोशल मीडिया पर भी ऐड नहीं करता. यार मैं काफी सरप्राइज हूँ कि आपका सेजल के साथ अभी कांटेक्ट नहीं है. ओ भाई यार आप तो काफी मूड में हैं आज सब याद आ रहा है आपको मगर यार बात यह है कि जिस क्या कहते हैं जिस स्टेडियम में ना हमारे अहमद भाई खेलते हैं हम वहाँ जाते ही नहीं भाई. मगर यार बंदी तो काफी नाजायज है भाई कि एक जमाने में उसकी मतलब पूरी ये क्या कहते हैं कि वर्जिन वाले सीन चल रहा था. हम यूनिवर्सिटी में थे तो हमारे ग्रुप थे हमारे एक हाई स्कूल के बाद एक 10-15 लोग की ग्रुप थे जो हाई स्कूल की दोस्त थे. आधे बंदे थे आधे बंदियाँ. तो उस ग्रुप में हम सब राब्ते रखते थे जब हम यूनिवर्सिटी चला गए और पर्सनल चैट्स भी चलते होते हैं. तो एक रात ना बंदी ने मुझे मैसेज कर ली और उसने कहा कि यार मेरे ये एक बंदा है जो हमारे ग्रुप से है और वो चाहते हैं कि मेरे साथ कुछ सीरियस करवाने के. तो मैंने कहा यार अच्छी बात है अब तो जानते हैं इसको सही.
मौका दे दो, मैंने उनसे ये कहा। और उसी रात बंदी ने वो तो यूनिवर्सिटी में थे, वैसे आजकल उसकी शादी भी हो गई तो मैं ज़्यादातर नहीं बताना चाहता हूँ, मगर वो एक म्यूज़िक फेस्टिवल गए एंड शी मेड आउट विद अ रैंडम डूड हु वाज ड्रंक एंड शी वाज ड्रंक एज वेल। और यार उसकी बाद ना मुझे यार ये ऐसी लड़कियां और ऐसी ताल्लुकात से मैं काफ़ी नाराज़ होता हूँ। उसकी बाद मैंने राब्ता ही नहीं रखी। यार ये तो बड़ी अफसोस की बात है, पर मुझे वाकई में लगता था कि ये कहानी का भी एक बड़ा it would come to a happy ending, but ये तो कोई दूसरी हैप्पी एंडिंग हो गई bro. किसी और की हो गई। मगर यार एक बात मैं कहूँ कि जो लड़कियां हैं ना, वो कभी मानते नहीं कि उसकी ज़िंदगी में कौन सी अच्छा वाला बंदा है। Like they don't like the good guys in their lives, they always go for the bad boys. मगर यार बात यह है कि बैड बॉयज़ की भी सोच कुछ और होता है कि वो काफ़ी दुनियादारी आखिर निकलता है और दिल तो बंदी की तोड़ जाता है। मगर इल्ज़ाम किस पर लगाए भाई कि I know nice guys aren't the best things. I don't think we classify ourselves as nice guys, but I know that nice guys are not like, they don't make women feel especially wanted or things like that, कि उसकी चाहत के बंदे तो नहीं निकलते, but like it is so much better than going after guys who are like that. मगर यार मैं ये भी बताने, हर किसी की अपनी ज़िंदगी होता है, जो आपकी मर्ज़ी से वो करना चाहते हैं करने दो, मुझे एक घंटा फ़र्क पड़ता है। बट बात यह है कि यार हमारे तो जो पर्सनालिटी है, आई डोंट नो व्हाट यू क्लासिफाई इट एज, आई थिंक। मगर यार आपको लगता है कि हमने काफ़ी दिल तो तुड़वाया है ना, कि मुझे पता है कि ये जो सारे बंदियाँ थे, मैं तो मतलब मजाक भी उड़ाता हूँ कि पीछे पड़े थे, मगर हर किसी की तो हमने कभी ना कभी, ये जो प्रिटी बॉयज़ की हमने बात की थी ना, लाइक women say they don't want pretty boys, हम भी उसकी हिस्सा है भाई, कि हमारे जो बुरी हरकतों से या हमारे ना चाहने से उसके भी दिल हमने तुड़वाए तो होंगे। तो if they're married to some random dude who looks like the last time he used face wash was when he was in university, it probably has something to do with us as well. हाँ ब्रो, ऐसा हो सकता है क्योंकि there is like it's kind of like the butterfly effect where nice. Every little thing that happens to you has like a ripple effect. It's like if that thing didn't happen, then your life would have turned out very differently, Mm-hmm. So ज़ाहिर है कि in someone's story we were the one that got away. ऐसा मुमकिन है, हो सकता है ऐसी भी कोई बंदियां हैं जिनकी कहानी में we were that character. यार मुझे जानने की काफ़ी दिल लगी है कि I want to know कि ये लड़कियों की पॉडकास्ट कहाँ है भाई, कहाँ सुन सकते हैं हमारे इल्ज़ाम। यार एक है who but I don't think that us not working out like impacted her very much. Mm-hmm. Because then it was just something where it was a crush on her, or that on her part from her end. Right. And I kind of liked her too, but I was with someone else, Oh. And obviously I was a loyal guy, and like I liked her before I was even dating this girl, but like I found her cute basically, Yeah. And then we were like talking, and we were like friends. Like, it gets back to that thing you said, कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, we were like guy and girl friends, yeah. Oh, by the way, एक straight लड़का और एक straight लड़की, हाँ? हाँ, exactly. बिल्कुल ऐसा ही scene था, और we were in grade 9, and it was exactly how you described it, because technically we were friends, mm-hmm. but really we both found each other attractive. Right. Except in my case, like I was
I was dating someone, you know. Yeah. So it was going to happen, and in her case, it was like she was single, so that's why she was still like talking to me, you know. So it does like it is an example of what you said, you know, where it's ऐसी दोस्ती हो नहीं सकती कि chances are that either you both like each other or one person likes the other. Yeah. ऐसा बहुत कम होता है where you know there's literally no feelings and it's just purely friendship. Yeah, that almost never happens. Exactly. वही और इसमें भी यही केस था, you know, we would talk a lot, but really it's because there were some feelings there. But आखिर में, you know, like when things didn't work out, because I think, you know, I think she told me at some point, but then I told her that, you know, I have a girlfriend and everything. और मैं भी काफी हरामी था, you know, I didn't tell her until much later, you know. You know, पहली बात तो थी, I didn't tell anyone about it. Yeah. You know how it was in Doha, we would try to keep things on the DL just because word gets around. Absolutely. तो स्कूल में तो मैंने साकिब के अलावा किसी को भी नहीं बताया था कि, you know, I have a girlfriend, and she was in a different school, so किसी को ऐसे भी नहीं पता था, you know. She goes to a different school, यार. If you said that, कोई मानेगा भी नहीं, यार. ये मसला है. Wait, it was literally a meme, you know. Yeah. कोई मानता. It was the perfect setting कि कोई it was a meme तो कोई मानता भी नहीं. जी. But हाँ यार, ऐसा था, you know, scene तो मेरे स्कूल में many girls would think that, you know, like, okay, you must be single then, you know, because there's no one in this school that you have a thing with. Yeah. तो हाँ, bro, and she was really cute too, but now she's married and she's a doctor. I think her husband's a doctor too. Nice. You know, and I'm happy for her, but you know, I don't think, you know, it was a setback in her life in any way. Like it was exactly what you'd expect a grade 9 crush to be like, you know, like you've watched Freaky Friday and when they're in high school and like they exchange music, you know, they exchange like songs or they stay up like chatting on like Messenger or what did we even have back then? It was Messenger, right? Yeah. It was Messenger. Yeah, we used to use like it was like the DMs but on Facebook. Right. Yeah. And yeah, that's just, you know, like how was the extent of it. So I don't think it set her back where she was like, oh man, how am I going to come back from this, you know? But it is something I think about often, you know, I'm like, had it worked out, it would have been interesting. Yeah. But she was someone who I think was like, she was cute, but not someone I would have dated, you know? True. ये अक्सर होता है कि हमारे टाइप भी काफ़ी हाई स्टैंडर्ड्स होता है. बट यार मुझे पता नहीं क्यों मगर हमारे ज़िंदगी में जो भी बंदी हमारे बाद ना सिर्फ तरक्की हुई है उनकी. कि मैं काफ़ी डायलॉग तो मारता हूँ कि यू नो 10 बंदे इकट्ठे कर लो मेरे काबिल नहीं होंगे, मगर यार जो भी बंदियाँ हमें छोड़कर जाता है काफ़ी खुश होता है भाई. मैं तो शुक्र अदा करता हूँ मगर पता नहीं कि हम कौन सी लानत है. नहीं यार, हम वाकई में उनकी स्टोरी में सलमान खान है, you know, कि हम एक फेज है तो आके चला गया और अभी वो शायद शुक्र अदा करती है कि ये बंदा हमारी लाइफ में नहीं है. जी. I wonder if you know if we are the red flags to them. Ki, you know, if like if her husband asks her, you know, does it bother you that I'm not all that good looking, and she goes, you know, no, this is exactly what I wanted, and you know he probably will never understand. मगर काफी बंदे हैं जो you know हमें तो शुक्र अदा करने जरूर है भाई. बिल्कुल यार, कि किसी की कहानी में, किसी विवेक ओबरॉय की कहानी में हम सल्लू भाई हैं यार. हर विवेक की कहानी में हम सल्लू भाई हैं. नहीं यार, विवेक भी नहीं हुआ यार, मतलब हर अभिषेक की कहानी में. हाँ, अभिषेक सही विवेक नहीं. ये विवेक तो यार विवेक पीछे रह गया, you know. यार शुक्र हम भी अदा करते कि हम विवेक नहीं निकले.
Oh, Vivek was like the Yeah. middle child of Yeah. it, you know? किसी को याद भी नहीं ना किसी को मतलब कहाँ पहुंचे भी नहीं बेहतर और Great Depression तो उसकी जिंदगी थी उसका career था, you know? nice yeah he's But just I'm Kareeb joking. I and really liked him in Shootout Company. in Lokhandwala. yeah shoot And Company as well. Yeah, Say Baat Kiya. Ji. I think he was made for the gangster genre, you know, and it's a shame that he only did those 2 films. Haan. But it's like, you know how Joe Pesci like was Yeah, just destined always the to Italian always gangster. be a mobster. Except for Home always Alone. play a mob. Yeah, that's that's true. I forgot about that. Yeah, buddy. Home Alone में यार वो यार if you watched Home Alone as a kid and you like grew up and saw Goodfellas, हमारे हमेशा यार ये असर पड़ता है कि you know this is one of the wet bandits but काफी यार accomplished actor थे. Oh yeah, same man. And he always like reminds me of George, like you know, him as a comedian is exactly what Joe Pesci is as a gangster. कि काफी एक ही तरीके के बंदे लगता है मुझे. Yeah, definitely that. I think the New Yorker character does it as well, you know? Yeah, the kind of fat, balding New Yorker. Same. Yeah, dude. They're just like textbook middle-aged New Yorkers, you know? Yeah. I think it's so interesting, but it gets back to this thing we were talking about, right? And kind of why I love big cities, like especially cosmopolitan cities. Right. So places like New York, London, Paris, Sydney, Toronto, Karachi as well, even though I've never been. Karachi, You know? List तो spoil कर दी. हाँ. लिस्ट का बर्बाद कर दिया से यार इतनी अच्छी लिस्ट चल रही थी जी. But यार I mean I think the one thing they all share despite being in like being completely different cities, like the one thing they share is that they have this kind of diverse makeup in terms of like linguistics or ethnicity or like communities, you know? And it's those different communities that together make the city what it is. And in the case of New York, right, if you think of like how both Joe Pesci and George Costanza, they're textbook New Yorkers, you know? There's just something so New York about them. Yeah. But really, they're of different backgrounds. Like, you know, one's like Italian, one's Jewish. But like, I don't know, like both of them are like very New Yorker, you know? Like they're like New York, I think, is composed of like its Jewish community, its Italian community, the Irish community as well. That's big too, and the African American community in New York. I think it's those like different groups together that make the city, give the city its character, you know. हाँ जी. और यार याद है कि अली भाई की जो पहली फिल्म था शायद पहले कि लंदन पेरिस न्यूयॉर्क था उसकी नाम 2009 के और पता नहीं यार कि it's still you know I've watched pretty much all of Ali's movies मगर they're not that great कि तेरे बिन लादेन भी मैंने देखा है but like he was such ये मैंने देखी थी. हाँ यार मगर he was such an influence on us growing up कि मुझे भी आजकल की जो मेरी क्या कहते हैं कि जिस तमीज़ से हम बात करते हैं लड़कियों से वो अली भाई से ही like अक्सर सीखा काफ़ी और ये जी. You know, sorry to cut you off, but एक वो गाना था यार और आपको शायद आपको फाइट क्लब तो याद होगी हिंदी वाली सलमान भाई का जी Yeah, they Fight Club ये वाली I think Sunil Shetty was in it too and then जो हिंदी वाली I think it has like a 3 out of 10 on IMDb. Yeah मुझे पता अरबाज खान थे या सोहेल खान थे कोई नहीं अरबाज सोहेल शायद दोनों ही थे सारे नालायक एक ही and then and
it was so bad, right? But I जी remember there's one song which was a banger. which It one was like छन्नों की आंख हाँ में ओ एक भाई नशा है. ये तो यार पाकिस्तान को पूरी हिला दी थी वो गाने क्या गाने थे यार यार क्या और ये गाने गाना फिल्म में भी था. And it was हाँ Ali Zafar who sang it in the movie जी too. जी And वो मुझे पूरी मूवी का वो एक गाना मुझे याद है बस ना कि हाँ अली भाई ने जो पूरी दुनिया पूरा सब कॉन्टिनेंट हिला दिया था जी ये. जी वाकई में कि क्या गाने थे यार चन्ना मगर क्या घटिया फिल्म में लगा दी कि कोई मतलब ताल्लुक ही नहीं इस फिल्म का और एक गाने का हाँ bro, same way, you know. It's like अक्सर ऐसा होता था कि गानों का कोई ताल्लुक नहीं होता था यार. जी जी मतलब प्लॉट से कोई ताल्लुक नहीं. हाँ कोई और मतलब कुछ रैंडम डांसिंग हो रही है कुछ यार नहीं था पर ये सबसे बड़े मतलब बुरे मिसाल आतिफ की गाना है कि अगर आप वीडियो देख रहे हो ना पूरे मतलब इमरान हाशमी वाले सीन चल रहा है और आतिफ के गाने यार इतने नेक है मगर इमरान ने कुछ और बना दी हाँ यार मतलब एक क्या कहते हैं जहर में एक एक था हरामी. हाँ It's like that song lyric, you know. I'm a hijabi girl in the harabi world. यार ये तो मैंने सुना ही नहीं मगर समझ सकता हूँ यार क्या बात है मगर जी वैसे यार ये सुनील शेट्टी और ये अरबाज सुहेल ना मुझे यार वाकई में अच्छे लगता है कि मैं ये बुरे फिल्म भी मैं आखिर अक्सर देखता हूँ कि अच्छे लगता है भाई कितने बुरा है कि मुझे वैसे अच्छे लगता है इतने बुरे के अच्छे है. जी जी वाकई नहीं यार एक्चुअली सुनील शेट्टी मुझे जनरली बहुत पसंद है you know. यार हेरा And फेरी में यार क्या एक्टिंग करवा दी बंदे ने कमाल किया. I was literally thinking of Hera Fairy as my example. जी एक तो उन तीनों की जोड़ी बहुत सही थी और सुनील शेट्टी की अपनी एक्टिंग भी बहुत सही थी you know. हाँ And यार ये मैं अक्सर कहता हूँ about like you know about many South Indians who speak Hindi हाँ and who speak it like perfectly like yourself. जी कि यार सुनील शेट्टी मुझे मतलब आपको पता है I grew up watching his movies right. और मुझे मतलब बहुत बाद में जाके after I was like an adult you know or like a late like adolescent तब जाके मुझे पता चला कि he's from like Mangalore you know. हाँ मुझे भी यार सेम वाकई और क्योंकि यार he speaks like perfect Hindi you know. And even John Abraham or like Vidya Balan, all of these actors, you know, I know they're from the South, but yeah, they speak better Hindi than most native speakers, you know. हाँ यार मगर ये आसान होता है कि अगर आप सोचो कि यूपी से है you have to unlearn you know your version of things like क्या जरूर कहने तो भूल जाने पड़ते हैं पहले so if you're learning something you know it's easy to learn it without the negative confluences तो यार मगर मुझे भी सुनील शेट्टी के बारे में and you know the thing I like the most is ये muscular वाला बंदा हमेशा nerds की रोल ही प्ले करता था it's so weird to me मगर मुझे अच्छे लगते थे यार कि मतलब पूरे मिसकास्ट है ये बंदा जहाँ शर्ट उतरना है यहाँ वहाँ ये ग्लासेस पहन के आता हो जरूर बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी बंदा था you know, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स you know. जैसे हम इस पे कैरेक्टर स्टडी करनी चाहिए you know, सुनील कौन इतनी फारिग है भाई the biography of Sunil Shetty requested by no one सिवा दो बंदों के But मैं हूं ना में भी उसका मुझे रोल बहुत पसंद था you know even though he plays small यार वो भी मुझे यकीन ही नहीं आता भाई कि ये इंतहा पसंद कैसे हो सकती ये बंदा जो खुद की इतने यकीन नहीं करते कैसे इंतहा पसंद हो सकते थे like if I saw his photo in the newspaper I'd be like हाँ ये कौन से टॉपर निकले सही में यार और बंदे का नाम क्योंकि नाम भी राघवन था यार you know it's something you would see on a list of like IIT toppers वाकई में कौन कास्ट कर रहे हैं यार इस बंदे को मतलब राघव भी थे ब्रो राघवन मतलब मुकम्मल शरीफ
और ये मतलब दहशतगर्दी कर रहा है और वहाँ आर्मी के खिलाफ लड़ रहा है वहाँ। हाँ यार क्या चूतिया पे चल रहे थे यार बॉलीवुड में, वैसे आजकल भी है मगर उस जमाने में भी नहीं यार वो एक्चुअली क्या था ना, I think the goal of the movie was to also to improve relations between India and Pakistan. हाँ लगा वो कुछ की नहीं यार कुछ असर तो खैर नहीं हुआ, but you know that was the whole idea. And the movie जो वो डील भी होती है मूवी में was called like Project Milap, you know. हाँ It's like to really bring the two countries together. हाँ and then it was like I think that was why they had like you know they showed like this group that's opposing it. जी और पता है वो एक टाइम था, this was before 2008, right? Yeah. उस टाइम में पता है you know they were like the two countries, it was almost like Australia and New Zealand. हाँ जी where कितने बहुत से पाकिस्तानीज थे who used to live in India. Like they used to live in like Mumbai or Goa or in like the bigger cities, and you know that was where they worked even, and their family would be in Pakistan, you know, so they would like they would visit their family the way that we would go to visit them, our extended family in India, you know. तो उनका काम वगैरह और उनकी लाइफ कारोबार सब कुछ इंडिया में होता था. And you know, especially people in entertainment, many of them their whole lives were in India, but they like were Pakistani. तो उस time यार there were more efforts to like make that just a long lasting you know like harmonious relationship. And I think that was why like they made the movie too, you know, that was definitely something they had in mind. हाँ यार, और मुझे याद भी है कि जो 26/11 की अटैक्स हुए थे ना, कि हर बंदा यार जो हिंदुस्तानी बंदे थे हर बंदा ऋतिक रोशन निकले उसकी बात भाई. कि मैं याद है कि मैं स्कूल गया था उसकी बाद, तो मैं मेरी पोपो के घर पे था जब ये हो रहा था, तो मैं टीवी पर देख रहा था, मगर मुझे लगा ही नहीं कि ये इंतहा पसंद की अलावा कुछ और थे. मगर यार अगले दिन तो वीकेंड था, तो उसके बाद जब मैं स्कूल गया हर बंदे यार, एक बंदे तो हाथ में टैटू करवा दी 26/11 वील नेवर फॉरगेट. एंड आई एम लाइक यार कुछ नए सोच लो, ये तो 9/11 पूरे कॉपी करने की क्या मतलब मकसद है तेरी. बट इतना पेट्रियाटिज्म आ गई भाई कि मुझे समझ ही नहीं आया कि कहाँ से आ गए. और हम तो दूसरे मुल्क की पेट्रियाटिक बंदा निकले आखिर. मगर यार ये भी बात है कि मुझे आज नोटिफिकेशन मिला अल जज़ीरा से कि हिंदुस्तान में चुनाव होने वाला है, और मैं तो भूल ही गया भाई कि it's literally next month, और it's like the biggest democratic elections in the world. और यार छोटी सी बात है कि किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, पता है कि कौन जीतेगा और कोई फ़र्क ही नहीं. मतलब यार आप सोचो कि पाकिस्तान में हुआ था 2 महीने पहले, और यार हर बंदे मतलब जो बड़े बड़े बंदे हैं वो भी वोट करने के लिए तैयार हो गई, और हर बंदे ने एक तरफे वोट कर दी, और मतलब जो निकला आखिर वो किसी और ने जीत ली. वैसे मरीम नवाज़ तो पंजाब की चीफ मिनिस्टर निकले, शहबाज शरीफ तो और कुछ मतलब पूरे मुल्क का तो प्राइम मिनिस्टर निकले. और यार मिस्टर 10%, मुझे ये तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट है. कि यार हम दोबारा तो 2012 में चला गए, मगर यार अजीब की बात है. मगर हर बंदे ना तो पाकिस्तान में पेट्रियाटिक बन गए थे, वोट करने गए थे. जिसकी वोट कराची में था वो लाहौर से कराची गए, और हमारे यार कोई बात ही नहीं कर रहा कि लाइक इट्स नॉट, आई हैव नेवर वोटेड इन माय लाइफ, आई पर्सनली डू नॉट बिलीव इन डेमोक्रेसी. ये सब हकीकत है. मगर उसके अलावा भी मुझे लगता है कि काफ़ी फ़र्क है दोनों डेमोक्रेसीज में, कि दोनों वर्किंग डेमोक्रेसीज तो नहीं होते मुझे लगता है, बट लाइक इतना फ़र्क है भाई. हाँ ब्रो, और वहाँ बल्कि इस बात के बावजूद कि लोगों को पता था कि वोट जहाँ डाल रहे हैं वहाँ जाएगा नहीं, जी उसके बावजूद इतने लोगों ने वोट किया था, you know, I was really impressed by that. हाँ जी. But हाँ bro, I mean इंडिया में तो अभी क्योंकि I think many people have like just accepted that, you know, और कोई पार्टी मतलब जीत ही नहीं सकती, you know, with the amount of support that the BJP has. हाँ यार. क्योंकि
और मुल्कों में देखें यार आप जैसे whether it's most countries, even multi-party states, they're like ultimately they're two-party states. There's two major parties, and the other parties are just like they have like a much smaller share of the votes. तो और मुल्कों में यार आमतौर पे जैसे it could be anyone, in America you don't know if they'll have a Democratic president or Republican. Australia as well, it could be Labour or Liberal. The UK it could be Labour or Conservative. But in India, man, for the last, I would say since 2014, so the last 10 years, it's kind of just a given, there's no one who even comes close to competing, हाँ यार कर क्या रहे बंदे हाँ यार मतलब और एक ज़माने में फिर भी थोड़ा होता था where Congress was I think where Congress was back in the day where it was the only party that would be in power. That I think is where the BJP is now. Yeah, exactly. Where 1970s I literally can't. हाँ वही जब मतलब नेहरू और इंदिरा गांधी और जी वही आजकल है मगर यार ये मोदी कब तक चलेगा भाई कि मुझे सक्सेशन भी ज़्यादा नजर नहीं आते उनकी प्लान्स में हाँ यार ये तो है पर बीजेपी आगे गेम चलाएगी ब्रो मुझे तो ये लगता है क्योंकि अभी कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं आज सीन में what I mean. मुझे भी ये लगता है and I think that's why nobody is really interested in voting कि यार मगर पाकिस्तान में भी ये चला था मगर पाकिस्तान में यार at least the PPP is in power और मुझे समझ नहीं आता कि बिलावल क्यों नहीं आए फिर भी यार मैं एक बात कहूँ कि ये मैं पूछना भी चाहता हूँ कि आसिफ अली जरदारी है ना कि जो इल्ज़ाम लगाया हुआ था उन पर कि करप्शन के ये मुझे ज़्यादातर गलत नहीं लगता है भाई कि दोनों मेरे हिसाब से मेरे सोच में दो तरह की करप्शन होता है एक B2B और एक B2C सही तो आसिफ अली जरदारी तो B2B करप्शन की बंदा है कि इफ़ यू वांट टू सेट अप अ शुगर मिल यू हैव टू गिव हिम 10% राइट ये तो ठीक है बंदा तो ही इज़ नॉट वो तो आवाम को नहीं लूट रहा है मगर जो नवाज शरीफ वाले करप्शन है ना B2C वो मुझे गलत लगता है कि गरीबों की मतलब पैसे लौटने में मुझे अच्छे नहीं लगता बट जो बेनज़ीर भुट्टो के और उस ज़माने के जो हुकूमत है मुझे PPP तो ज़्यादातर बेहतर लगता है कि दैट आल्सो काइंड ऑफ लिबरल मगर मुझे फिर भी समझ नहीं आता कि ये बिलावल बंदा क्या कर रहा है कि बंदे तो ही इज़ 40 years old क्यों आसिफ अली जरदारी की हालात भी काफ़ी नाजुक है तो क्यों बिलावल नहीं आए मुझे समझ नहीं आता है मगर अक्सर यार काफ़ी मतलब गेम्स चल रहे होते हैं पाकिस्तान में बट एटलीस्ट इट्स लाइक अ कोएलिशन कि वो तो फिर भी बेहतर है बीजेपी तो यार अपनी मर्जी से बातें कर रहा है हाँ यार मतलब उनके क्योंकि they don't even have to consult with anyone now to make decisions जी but वही है यार कि there's no real opposition I mean पाकिस्तान में तो फिर भी opposition है but legally they're not really getting a chance because क्योंकि election में rigging इतनी है and vote counting में rigging है और किसी पे भी झूठे केस लगा के you can detain someone or make them ineligible from running तो इस तरह के भी यार बड़े मसले हैं क्योंकि पहले यार पाकिस्तान had many socialist parties as well हाँ यार था और हाँ यार एक ज़माने में थी अभी भी there are some regional socialist parties जी पर बहुत सी ऐसी चीजें हुई थी यार एक ज़माने में जैसे जिया के दौर में बल्कि जिया से पहले जुल्फ़िकार के टाइम में हाँ वो वैसे PPP काफ़ी सोशलिस्ट था हाँ यार बिल्कुल बिल्कुल और सिंध में तो काफ़ी एक तारीख भी है और सोशलिज्म की जी और पर हाँ ब्रो यहाँ फिर जिया और जुल्फ़िकार के आने के बाद से
जब यार थोड़ा ज़्यादा when it started to get more like fundamentalist जी तो उनमें तो ये भी फिर एक belief फैल गई थी which was कि यार you know socialism और लादीनियत और ये तमाम चीज़ you know are all one and the same कि you know इन चीज़ों को क्योंकि उस वक्त अमेरिका का मकसद ये था कि to fight off the Soviets in the region जी so they needed like an Islamic argument for to oppose socialism, you know, ताकि लोगों को convince करें to get up and fight against the Soviets and join the Mujahideen. Yeah, McCarthyism. Yeah, that's right. And तो उस वक्त उन्होंने यही मतलब बात एक की थी कि फतवे इस टाइप के होते थे कि you know socialism is like haram and it's like you know it's the work of the devil and it's like you know it's it literally has like ladiniyat as part of the ideology, you know. So it was just a socialism be you know it like largely died out in that period. और अभी तो यार bro काफी off scene है, you know, in this election even like the क्या नाम है और उनका जो लबैक वाले हैं TPI yeah TPL I think it's TPL right Tehreek-e-Pakistan लबैक यार आपने देखा होगा वो यार जो they go like लबैक यार वो तो काफी crazy type के हैं you know and even there जी or and they've gained like a strong like foothold and you know in like KPK parts of Punjab as well you know तो इस तरह की जो regional parties हैं यार वो जिया और भुट्टो के टाइम से ज़्यादा आने लगी हैं and you know it's really changed like the dynamic of the politics as well just shifted it much like farther to the right जी where अभी यार पिछले हफ्ते की मैंने खबर देखी थी कि you know there was a poll asking people you know in Pakistan about their views on Shia and it speaks again to the power of the TPP and also just long-term change that's happened but like some 40% of Pakistanis said that Shia are not Muslim. Oof. You know, tough. Yeah, man, that's almost half the country. You know, but it's just a real irony and a tragedy that the country was founded by a Shia. You know, and bro, ये हालात तो हैं, and it's largely like America that's been like the driving force behind it. जी. कि ये तमाम जो कुव्वतें हैं वो उनको अमेरिका ने पैदा किया था और उनको हथियार दिए थे ट्रेनिंग दी थी और पाकिस्तान की रियासत भी इसका हिस्सा रही है you know they're like military establishment in collusion with them तो America उनके अपने मुफादात थे you know they wanted to win the war and then defeat the Soviets in the region और अभी बाद में जाके फिर उनकी ईरान के साथ क्योंकि दुश्मनी थी तो उनको पाकिस्तान में it was in their interest to like to further cement the Shia Sunni divide you know जी और जी बताएं जी नहीं एक फिल्म है जो काफ़ी खूबसूरत है कि Charlie Wilson's War and it's about the Afghanistan war with the Soviets and it's Tom Hanks and it's a pretty good depiction of what happens but he was a senator and he did get a lot of work done and do you know who plays Ziaul Haq? It's Om Puri so it's no way. It's a good movie but almost episode खत्म होने वाला है तो आपको क्या लगता है इसकी नाम लगवा दूं यार इस पे क्या नाम रखा जाए इसका Pretty Boys से तो शुरू की तो Pretty Boy Problems यार that's good Pretty Boy Problem
This has been season 3, episode 8, Pretty Boy Problems, and we'll see you in the next one.